Again, nerve fiber again is of two types we know. And what is the two different type of nerve fiber again? Sensory nerve fiber and motor nerve fiber. What is the difference between sensory and motor nerve fiber? Sensory nerve fiber क्या होगा? To the CNS के from the CNS. क्या हो जाएगा? To the CNS. So sensory nerve fiber are actually coming from the sensory organ to CNS, and that will carry the sensory nerve impulses. And motor nerve fiber which carry the motor impulses from CNS to motor organ. सेंसरी ऑर्गन एंड मोटर ऑर्गन दोनों में से कौन सा अफेक्टर है, कौन सा इफेक्टर है? जो अफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज सेंसरी, एंड जो उसके रिस्पॉन्स में जो फंक्शन करता है इफेक्ट. ठीक है. नाउ वी आर कमिंग टू nerve. Nerve actually bundle of nerve fiber. Bundle of nerve fiber connected by connective tissue. मैं अगर ट्रांसवर्स सेक्शन नॉर्थ का करता हूं कैसे दिखाई देगा? मैं एक लेवलिंग करने के लिए खाली कर रहा हूँ. थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा कि वी आर एक्चुअली टेकिंग हियर डायग्राम ऑफ व्हाट? द डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ nerve. This is actually the transverse section of nerve. Transverse section of the nerve. तो फिर nerve मैंने क्या बताया ना, it is a bundle of nerve fiber. And what is the meaning of nerve fiber? क्या बताया था? Encased axon की naked axon? हाँ. Now मान लेते हैं suppose to be
This is axon with exolemma. एक्सॉन के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा? एक्सॉन के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा? सिथ, क्योंकि ये नॉर्थ फाइबर है. बंडल ऑफ नॉर्थ फाइबर इज कॉल्ड एज नॉर्थ. तो नॉर्थ फाइबर मींस एक्सॉन सिथ कवर्ड है कि अनसिथ है? एंड कौन सा सिथ मैंने बताया था? माइलिन एंड न्यूरिलेम. Myelin sheath and neurolemma. Now here the axon is completely covered by another sheath, and that is called as what? Endoneurium. Endoneurium is the covering around what? Axon. Sorry, that is the covering around what? Now that is nerve fiber. So endoneurium is the covering around nerve fiber. Now अभी बहुत सारा nerve fiber आपके सामने. The bundle of nerve fiber is called as, this is the bundle of nerve fiber called as what? Na fascicle. हम लोग पढ़े थे मसल्स में भी fascicle, याद है? That is muscle fascicle. Here it is nerve fascicle. That is where the collection of the bundle of muscle fiber is called as muscle fascicle. Here it is the bundle of nerve fiber is called as what? Na nerve fascicle. And now this fascicle is covered by the covering called as what? Perineurium. Perineurium किसका covering है ना? Around fascicle. Fascicle क्या है? That is actually the bundle of, the collection of nerve fiber. And one nerve contains many fascicles. And the complete nerve is covered by another covering called as what? Epineurium. The epineurium is covering around the whole nerve. जैसे हमने मसल्स में पढ़ा था वैसे यहाँ पे नर्व्स में भी. समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी आप यहाँ पे दे सकते हैं. These are actually the connective tissue, blood vessels, etc. समझ में आ गया सबको? Now what actually the different type of nerves are there? तो हम लोग अभी आते हैं टाइप्स ऑफ नर्व्स में. सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड. सेंसरी मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ बंडल ऑफ विच नर्व फाइबर? सेंसरी नर्व फाइबर. As it is a bundle of sensory nerve fiber, must be they will carry sensory impulses from sensory organ to CNS. Just like देखिए नर्व डिपेंड करता है कि नर्व फाइबर का नेचर क्या है, क्योंकि नर्व अल्टीमेटली द बंडल ऑफ नर्व फाइबर.
तो नॉर्थ फाइबर का नेचर जैसे होगा नॉर्थ का भी नेचर वही होगा। एंड इफ द nerve is made up of both type of nerve fiber, then it is mixed. Means this kind of nerve fiber will carry the both sensory impulses as well as motor to the CNS from the CNS. इसीलिए मिक्स्ड हमेशा नर्व होता है, मिक्स्ड कभी न्यूरॉन भी नहीं होता है, नर्व फाइबर भी मिक्स्ड नहीं होगा। मिक्स्ड इट कैन बी ओनली नर्व्स। बाकी आप लोग नर्वस सिस्टम में जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि नर्व्स अगेन इज ऑफ टू टाइप, whether it is origin and innervated from the brain, then it is called as cranial nerves, and it is origin and innervated from the spinal cord, then it is called as what? The spinal nerves. How many pair of cranial nerves are there? 12 pair. And what are the pair of spinal nerves? 31 pair, right? Which two pair of the cranial nerves are absent in case of anamniotes? Anamniotes and amniotes का मतलब जानते हैं? Amniotes किसको बोलते हैं? Those having amnion as a protective layer around the embryo called as extraembryonic membrane, then it is called as amniotes. And amniotes के अंदर कौन कौन आएगा? Reptiles, birds and mammals. बाकी उनको छोड़ के जितने भी सब आ जाएंगे क्या होगा? अनाम्नियोट्स। तो अनाम्नियोट्स के अंदर कौन आ जाएगा? साइक्लोस्टोम्स, फिशेस, एम्फीबियंस। एमनियोट्स में होता है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, एनाम्नियोट्स में होता है 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। विच टू पेयर इज एब्सेंट? लास्ट टू पेयर पढ़ेंगे जब नर्वस सिस्टम तब बताएंगे। Now, this is actually the end of the nerves, nerve fiber. Now, as per the classification, याद करिए nervous tissue मैंने बताया था, nervous tissue is formed of 4 different type of cells. First क्या था? nerve cell और neurons. Complete हो गया। अब second में हम लोग आते हैं। न्यूरोग्लिया और ग्लैंड सेल्स। इसको न्यूरोग्लायोसाइट भी बोलते हैं। न्यूरोग्लिया और ग्लैंड सेल बहुत ही पॉपुलर है, बट इसको न्यूरोग्लायोसाइट्स भी बोलते हैं। This is actually nervous cells of the nervous tissue कि non-nervous cells of the nervous tissue? ये first question. It is non-nervous. तो ये नॉन रेस्पॉन्सिव हो गया कि रेस्पॉन्सिव हो गया? नॉन रेस्पॉन्सिव टिश्यू, एंड इट इज प्रेजेंट in between the neurons. न्यूरॉन तो रेस्पॉन्सिव है, उनके बीच में नॉन नर्वस और नॉन रेस्पॉन्सिव सेल्स प्रेजेंट है, ग्लायल सेल्स। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्लायल सेल्स? मेन फंक्शन क्या है ना? एक्ट एज पैकेजिंग बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। ये पैकेजिंग का काम करता है। ऑल्सो एक्ट एज व्हाट? ना इंसुलेटर। अगर ये इंसुलेटर नहीं रहेगा, नॉन नर्वस अगर न्यूरॉन्स के बीच में नहीं रहेगा, तो जो कंडक्शन होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू द साइनेप्स, यही तो होता है। तो ये लैटरली पास करने का चांस, एंड दैट इज व्हाई इन बिटवीन द टू न्यूरॉन, दिस इज वन न्यूरॉन, दिस इज अनदर न्यूरॉन, उन दोनों के बीच में ये क्या है? नॉन नर्वस। सो दैट लैटरल ट्रांसमिशन का जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं होगा। इसीलिए हमेशा न्यूरॉन जो है वो प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक पासेस थ्रू द सिनेप्स पास करता है। अगर हम नॉन नर्वस सेल्स को हटा देंगे तो लैटरली पास कर जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज एक्ट एज इंसुलेटर टू प्रिवेंट
the lateral transmission of nerve impulse. We prevent the lateral transmission of nerve impulse. और इसका क्या फंक्शन है ना, इन जनरल फंक्शन में बता रहे, इट इज ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट टू न्यूरॉन. न्यूरॉन क्या है, ब्लड सप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, वेस्कुलर की नॉन वेस्कुलर. न्यूरॉन्स क्या है, नॉन वेस्कुलर. कभी सोचे व्हाई द न्यूरॉन्स आर द नॉन वेस्कुलर, क्यों यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हुआ है. सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन तो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, न्यूरॉन हर वक्त काम करता है. देन हाउ इट इज बीइंग कंट्रोल्ड. सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो उनको ही चाहिए, नहीं तो फैटिक हो जाएगा. देन व्हाई इट इज नॉन वेस्कुलर एंड हाउ द प्रोसेस इज बीइंग कंट्रोल्ड. अभी दिमाग में आया क्योंकि ये ब्लड सप्लाई क्यों नहीं हुआ है. As it is the most sensitive part of your body, blood always contains, blood contains what na, harmful substances, useful substances, toxic material, all. Blood, if it is in direct contact with the neuron through CSF, क्योंकि न्यूरॉन कवर्ड हुआ है किसके थ्रू, न्यूरॉन को डायरेक्ट कम्युनिकेट कौन कर रहा है, CSF, नॉट ब्लड. एंड ब्लड एंड CSF के बीच में बैरियर, so that blood doesn't in contact with the neurons or CSF, as because blood contains the harmful or toxic material can be directly enter into the CSF, and that will be what na cause the damage to the neurons of your brain. तो brain अगर distract हो गया, brain अगर disturb हो गया, तो आपका body का हर एक function voluntary हो involuntary हो, everything will be disturbed. And that is why here is a selectable permeable membrane who act as a barrier between blood and CSF, called as brain blood barrier. क्या बोलते हैं उसको, yes, blood brain barrier. कौन है ये, वही न्यूरोग्लिया जो ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करता है. तो we'll see it. It forms more than 50% of nervous tissue. ये बहुत ही important sentence. It actually forms more than 50% of the nervous tissue. The most abundant cells present in the nervous tissue is neuroglia. We are coming to the types. Number 1. Macrocyte, otherwise called as what? Astrocyte. नाम सुने हो? सुने हो कि नहीं? मैक्रोसाइट और एस्ट्रोसाइट. मैं 2-3 पॉइंट लिखूंगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं. मैक्रोसाइट और एस्ट्रोसाइट एक्चुअली two different type. One is fibrous astrocyte, which is present in the white matter of central nervous system. Another is protoplasmic astrocyte, and this is present in the gray matter of the CNS. मेन और डायरेक्ट फंक्शन में आते हैं. दिस इज एक्चुअली लार्जेस्ट abundant, and what is the main function of the astrocyte? ना ये रिपेयर में हेल्प करता है. एंड आप लोग को पता है कि नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन्स, आई एम स्पेशली टेल कि न्यूरॉन्स, एक तो ब्लड सप्लाई नहीं हुआ है, नंबर 2 न्यूरॉन्स में क्या एब्सेंट है, सेंट्रियोल, राइट. तो सेंट्रियोल एब्सेंट होने से, सेंट्रोसोम एब्सेंट होने से क्या होगा,
सेल डिवीजन एब्सेंट होगा, दैट इज व्हाई द न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड। तो फिर रीजनरेशन किसका होता है? नॉन नर्वस की नर्वस, नॉन नर्वस, एंड वो क्या है? न्यूरोग्लिया। सो लार्जेस्ट अबाउंडेंट repair of nervous tissue also act as blood brain barrier। अभी आपको बताया ब्लड ब्रेन बैरियर का कंसेप्ट क्या है ना, इट इज एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द ब्लड एंड सीएसएफ। ठीक है, सो इट ऑर्बिट ओनली द यूजफुल सब्सटेंसेस व्हिच इज नेसेसरी फॉर द ब्रेन और न्यूरॉन्स। ठीक है, इससे ज्यादा हम लोग को और नहीं चाहिए। चले हम लोग नेक्स्ट पेज में। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज नंबर 2। ऑलिगोडेंड्रोसाइट। ऑलिगोडेंड्रोसाइट क्या बनाता है? हम लोग प्रीवियस क्लास में ही पढ़े थे। यस, processes of oligodendrocyte forms a myelin sheath in CNS in absence of swansons। तो ये हो गया ऑलिगोडेंड्रोसाइट का फंक्शन, बहुत ही जेन्युइन फंक्शन है, एक ही फंक्शन पूछता है। नंबर 3 माइक्रोग्लिया। इट इज एक्टोडर्मल और मेसोडर्मल origin। phagocytic cells, the cell eating in the nervous tissue is called as what? Microglia। तो ये स्मॉलेस्ट है, phagocytic है, smallest and phagocytic cells which is mesodermal in origin is called as what? Now microglia। So this is all about the glial cells or neuroglia। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड, हमने क्या बताया था? देखिए तो चेक कर लीजिए, एपेंडाइमल सेल्स लिखाया था। नर्वस टिश्यू में 4 अलग अलग टाइप का सेल्स प्रेजेंट था। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, नंबर 2 ग्लाइल सेल्स, नंबर 3 एपेंडाइमल सेल, नंबर 4 न्यूरोसेक्रेटरी सेल। सो आई एम कमिंग टू द एपेंडाइमल सेल। इट इज एक्चुअली columnar epithelial cell। तो ये नर्वस हुआ कि नॉन नर्वस हुआ? इट इज आल्सो नॉन नर्वस। सो इट इज ए columnar epithelium with cilia and microvilli। अब आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, सिलिया भी होगा, माइक्रोविली भी प्रेजेंट होगा, एंड दैट इज स्ट्रक्चरली कलमनर सेल्स। तो फंक्शन क्या होगा उसका? एक तो कंडक्शन भी करेगा, दूसरा एब्जॉर्प्शन भी करेगा, है कि नहीं? तो व्हाट इज द फंक्शन? राइट, कंडक्शन ऑफ CSF and absorption of excess CSF। तो जो एक्सेस CSF होगा उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, एंड जो CSF है उसको कंडक्ट करता है थ्रू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड शायद आप लोग पढ़े हो 11th में कि CSF secreted by yes, anterior choroid plexus present in the brain।
that actually secretes CSF. हम लोग ब्रेन टॉपिक में पढ़ेंगे उसके बारे में. Next, number 4, that is neurosecretory cell. Neurosecretory cells are exclusively found in कहाँ पे? बॉडी में, ब्रेन में सिर्फ एक ही जगह पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट है, वो क्या है? हाइपोथैलेमस. Neurosecretory cells are those the neuron which secrete hormones. And आप लोगों को क्लियरली पता है कि हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन मेड अप ऑफ न्यूरॉन व्हिच सीक्रेट व्हाट? हार्मोन्स. एंड उस हार्मोन का नाम क्या है? न्यूरो हार्मोन. है कि नहीं हम लोग कि हार्मोन्स व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज न्यूरो हार्मोन. एंड व्हिच सेल सीक्रेटिंग दिस न्यूरो हार्मोन्स? ना neurosecretory cell. And that is why neurosecretory cell exclusively found in the hypothalamus only. And you studied in the 11th, the neurohormones is up to different type. One is releasing hormone or releasing factor. Second is inhibiting hormone or inhibiting factor. Releasing hormone का function होगा stimulation. Inhibiting hormone का function क्या होगा ना? Inhibition. And that is the reason why the hypothalamus is actually the master gland. Hypothalamus actually control करता है pituitary gland को. That is why hypothalamus is the master gland actually. But अगर हम pituitary को master बोलेंगे तो hypothalamus हो जाएगा master of master. ठीक है? So this is the end of your chapter.